Are you planning to buy yourself an external hard drive or SSD? Is your computer running out of space? Before you buy any or take further action, watch this video. Welcome back everyone, this is Katie Sharma. I hope you're having a wonderful time there. जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया है मेरे डिवाइसेस की डेटा स्टोरेज इज़ लाइक गोइंग आउट, इट्स completely out. So sometimes I don't even have any more space left on my main MacBook Pro that I use for all the work majorly. And then I thought that I should move most of the data out of this device. किसी hard drive या SSD, external SSD पर ये data move मैं कर देता हूँ, which I have been doing as well. But then I still have to buy myself additional SSD drive. So I knew that in future मुझे ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरह की devices की. So I bought myself from Amazon this SanDisk Extreme Portable SSD, 1 terabyte. This is pretty much it as of now. Then I was scrolling through the products and there were some recommendations. जैसे आप Amazon से purchase करते हैं कुछ भी तो आपको बहुत सारी recommendations आने लग जाती हैं. So I just kind of found this enclosure which is interesting and looking beautiful though. It's from Orico. It's a M.2 SSD enclosure. तो इसके लिए हमें एक SSD की ज़रूरत है. तो at the same time I bought myself this Crucial SSD and this is PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD and it's a P3 edition by the way. इसका एक higher version भी available था, but I thought that it is okay as of now because what I wanted to do here is जब मैंने इस SSD को खरीद लिया तो इसकी cost थी approximately 10K after discount applied. Now I thought that why not trying something different? It is simply a plug and play game, so कुछ different करके देखते हैं. So I bought myself this enclosure. And at the same time I bought myself this SSD which is also 1 terabyte again, and this enclosure is for about 4,000 after discounts, and this SSD is for about 6,000, 6K, 4K and 6K, so that makes it 10K. So ये एक device and ये एक device, ये भी 10K, ये भी 10K. So I thought that why not doing some comparison later on. So I'll be just checking these two devices, the test and their results, जो कि मैं excited हूँ इसके बारे में. So in this video we are not doing any comparison, we are not even unboxing this SanDisk. I will make a separate video on that, but for these products, but in this video I'm going to unbox these two products, set them up, their hardware installation and everything. I will cover up that, and then we will run some tests with our computer device. So stay tuned to the video and let's find out the results. I'm excited. Okay, so time to unbox this SSD that I have here. ये है from Crucial PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD P3 edition है ये 1 terabyte की SSD है, and it can support up to 3500 megabytes a second of reading speed and 3000 megabytes a second writing speed, which is massive. Let's see कि ये टेस्टिंग के दौरान क्या स्पीड हमें देने वाली है. And on the box there is nothing too much important, and without wasting any time let's jump into the box. Inside the box हमारे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है देखने के लिए या फिर डिस्कस करने के लिए, लेकिन हमारे पास है कि यूज़र गाइड, इसके अलावा एक माउंटिंग स्क्रू, एंड ये है हमारी मेन यूनिट. Okay, so this is Orico M.2 SSD enclosure, and before we unbox this, let's take a look at the box. ये डिवाइस 3 कलर ऑप्शंस के साथ आती है. One is rose gold, silver and grey. The one I have right now is the grey color. The model number of this device is M26C3-G2. Material जो यूज़ हुआ इसे बनाने में है aluminum alloy. ये डिवाइस जो इनपुट सपोर्ट करती है वो M की एंड B एंड M की दोनों टाइप का. आउटपुट C टाइप है. ट्रांसमिशन रेट हो सकता है इसका मैक्सिमम 10 गीगाबाइट्स पर सेकेंड. इसके साथ कंपैटिबल SSD हो सकती हैं M.2 NVMe SSD 2230, 2242, 2260, 2280. It is all supported by Windows, macOS, Linux, Android. So let's not waste any time. Let's get inside the box. Okay, so बॉक्स में हमें मिलता है एक थर्मल फिन जो हीट रिडक्शन के काम में आएगा.
USB टाइप C टू USB टाइप C एंड इसके साथ USB टाइप A कनेक्टर भी आता है. सो अगर किसी डिवाइस में USB टाइप C पोर्ट नहीं है, यू कैन सिंपली यूज USB टाइप A 3.0 as well. It's like a thermal pad. This is screwdriver. This is the main unit. इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी फिनिश बहुत अच्छी है. इट फील्स स्टडी, वेरी स्ट्रॉन्ग. मैं इसे जितना दबा सकता हूँ दबा के देखा है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल मेकिंग एनी इम्पैक्ट कि ये दब रहा हो कहीं या कुछ ऐसा. USB टाइप C पोर्ट जो कि सपोर्ट कर सकता है अप टू 10 GB a second स्पीड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिवाइस एंड द मेन यूनिट इनसाइड यू हैव. यहाँ पर टॉप में इसके Orico की बैजिंग इंडीड, सम डिटेल्स एट द बैक, स्क्रू जिससे हम इसे ओपन करेंगे. यहाँ पे एक होल है छोटा सा जो कि कोई इंडिकेटर के लिए, आई एम श्योर यहाँ पे कोई इंडिकेटर होगा. सो दिस इज ओवरऑल द यूनिट, यूजर मैनुअल एंड सिलिकॉन टाइप स्क्रूज हैं. आई डोंट नो इनका इस्तेमाल क्या है. आई विल रीड द मैनुअल एंड देन आई विल डेफिनेटली यूज देम. Okay, so let's not waste time and install this SSD inside this aluminum enclosure from Orico. So हम इंस्टॉल करने वाले हैं SSD को. ये है इसका फेस. इसे इसमें एडजस्ट करने के बाद वी कैन पुश इट इन लाइक दिस एंड इट इज़ रेडी टू गो. नाउ वी कैन गो अहेड एंड क्लोज दिस एनक्लोजर. ये स्क्रू SSD के साथ आया है एंड आई डोंट फाइंड एनी यूज़ ऑफ इट एज वेल, तो इसको हम जस्ट ऐसे ही छोड़ देंगे एंड आवर SSD इज़ रेडी. सबसे पहले इस डिवाइस की स्पीड चेक करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ हियर इज, मैं इसे यहाँ से स्विच करता हूँ. सेलेक्ट टारगेट ड्राइव. बाय द वे आई एम यूजिंग दिस एप्लीकेशन ब्लैक मैजिक डिज़ाइन एंड यहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिलता है क्रूशियल. आई विल सिंपली सेलेक्ट दिस. नाउ आई विल स्टार्ट द टेस्ट. ओके, इट इज़ लिटिल स्ट्रेंज क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो इसकी राइटिंग स्पीड it is going pretty much close to 900 megabytes a second, which is 888, and then reading is lower जो कि जा रही है about 496 or 7 megabytes a second. स्पीड टेस्ट कर लेते हैं कुछ रियल डेटा फोल्डर के साथ. सो आई हैव गॉट प्लेस्ड ऑन माई डेस्कटॉप ये टेस्ट फोल्डर जिसकी जो कैपेसिटी है, जो इसका साइज़ है वो है about 38 gigabytes. एंड इसे मैं मूव करूँगा इस Crucial SSD फोल्डर में. And then I will also start this time watch. Copy, and I'm going to paste it. इसे 38 GB डेटा रीड करने में लगा है लगभग 42 seconds. 38 GB डेटा. तो उस हिसाब से अगर मैं स्पीड देखें तो इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है. रीडिंग स्पीड इसकी लगभग 800 मेगाबाइट सेकंड के अबाउट मुझे महसूस हो रही है, विच वी विल कैलकुलेट लेटर ऑन. सो बॉटम लाइन इज़ दिस कि इसको 38 GB डेटा मैकबुक प्रो से रीड करने में लगभग टाइम लगा है 42 सेकेंड्स. अब इसी डेटा फोल्डर को हम वापस मूव करते हैं. हियर्स व्हाट आई विल डू. पहले मैं इस फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैकबुक से. अब इसी डेटा फोल्डर को 38 GB के डेटा फोल्डर को अब हम मूव करते हैं वापस मैकबुक की स्क्रीन पर. सो आई विल सिंपली कॉपी इट, पेस्ट इट एंड स्टार्ट. – 45 seconds. इस फोल्डर को 38 GB के फोल्डर को Crucial SSD फोल्डर से मूव करने में लगभग लगे 45 seconds. Installing this little piece of hardware was absolutely fun. For the first time मैंने इस तरह की कोई SSD को किसी enclosure में इंस्टॉल किया है और it was absolutely smoother experience. तो अगर आप में से कोई SSD ख़रीदना चाहता है तो वो इस तरह का एक्सपीरियंस भी ट्राई कर सकते हैं. हालांकि इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई रिकमेंड यू. यू कैन बाय एनी इनक्लोजर फ्रॉम एनी ब्रांड. किसी भी ब्रांड का कोई इनक्लोजर ले लो जो आपको बजट में हो और आपके लिए लाइक आपको सूट कर रहा हो, और अकॉर्डिंगली आप SSD खरीद सकते हैं. बट की थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर.
अगर इस तरह का इनक्लोजर खरीद के उसके साथ SSD इंस्टॉल करने वाले हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपने इनक्लोजर NVMe M.2 SSD कंपैटिबल खरीद रहा है तो आपको उसके लिए उसी टाइप की SSD होनी चाहिए जो कि M.2 SSD हो, ओनली NVMe। एंड देन अगर आपने अपने लिए एक इनक्लोजर खरीदा है जो कि NVMe also SATA SSDs को सपोर्ट करता है, then you can definitely buy SATA or NVMe M.2 SSDs. That would be absolutely fine. So that was a key point you all need to remember before you buy these kind of devices. But this is impeccable. Physical experience or physical impression of this device is impeccable. It is undoubtedly luxury, like it feels premium. There is no doubt about it. And on top of that, a little cherry on the cake is ye color. It's like a space gray. It matches my MacBook Pro immensely, and I like it. It is looking cool. It is about 10 centimeters only, and it can fit easily any pocket, and you can carry it all around. However, I really don't know if it is water resistant or dust resistant, anything like that, but this feels premium. So I am going to enjoy using this device, and further review would be definitely posted in case I experience anything while I'm using this product. I hope you like this video. If you like the content on this video, you can hit that like button. You can leave me a comment in case there is a suggestion or anything you want to add, or you want to appreciate the work a little bit. And also, why not subscribing this time? That would be highly appreciated if you subscribe, and I promise to keep bringing some informative content to you over and over. Thank you for being on the video. Have a lovely rest of the day, evening, or night ahead, and we'll talk to you soon. Signing off.